Tonight, Kainat Sumro says she was gang raped at 13. These accused men insist they're innocent. Inside one of the most well-known and complicated rape cases in Pakistan. Was it rape or a love affair? Because system supports aggressor. She will be the loser. Frontline takes a harrowing journey through Pakistan's tribal customs and broken justice system to tell a story of love, lies, and mysteries from a faraway place. Why will a 13-year-old girl lie? Is her very life in danger? She's an outcast. She will never get married. She's destined to be killed by someone from her own family because she's impure now. So why will this girl lie? Tonight on Frontline, outlawed in Pakistan. This is Pakistan. We traveled here to meet a young woman who had a story to tell. मेरा नाम है कायनात सुमरो। मैं 8वीं जमात की शागिर्द थी। तो मैं स्कूल गई तो मेरी भाभी ने कहा सामान लेकर आना भतीजी के लिए। तो वापसी पर मैं आई रेशम गली में दुकान पर। मैं देख रही थी तो मेरे पीछे से आया और मेरे नाक पर रुमाल रखा। मैं बेहोश हो गई। फिर उसने मेरे साथ ज़्यादती की। 3 लोग थे। फिर मुझे नशे की हालत में तीनों जवाबदार वहाँ से ले गए नामालूम जगह पर। फिर जहाँ पर वो चौथा आदमी था उसने मेरे साथ ज़्यादती की। मैं जब भी होश में आती थी तो वो मुझे नशा देते थे। फिर उन लोगों ने मुझे धमकाया, डराया। वहाँ पर उन लोगों के पास हथियार थे। उन्होंने मुझे यही धमकी दी, तुमको मार देंगे, तुमको बेच देंगे। फिर ये लोग जब बाहर गए तो मैंने देखा कोई नहीं था। मैं वहाँ से भागी अपनी जान बचाकर। मुझे न सर पर दुपट्टा था, न ही पाँव में चप्पल थी। मैंने देखा एक बस खड़ी थी तो मैंने बस वाले को अल्लाह का नाम दिया और अपने बाबा का नाम बताया। तो फिर उसने मुझे अजरक पहनाया और अपने घर वापस ले आया। 3 दिन गायब थी। After her escape, Kainat says she told her family about what had happened during those 3 days. फिर बाद में जब मैं वहाँ से भाग कर आई तो फिर मुझे ले गए थाने में। मेरे भाई ने कोशिश की कि FIR काटी जाए, हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की जाए, हम लोगों को गिरफ्तार किया जाए। तो पुलिस वहाँ की वडेरे पुलिस एक हो गई। वहाँ पर जरगा सिस्टम था, वहाँ पर 62 लोग थे, वहाँ पर वडेरे थे। तो वो कह रहे थे कि जरगा करो, इसको काले करा दो। हमारे भाइयों को धमकियाँ, हमारे बाबा को धमकियाँ कि तुम इसको बस ख़त्म कर दो। The first time we met Kainat, we found her family surrounding her, defying their local traditions. क्योंकि मैं भी कायनात का फैमिली का मेंबर हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो वो यही सोच कर के हमें तकलीफ़ दे रहे थे कि ये भाई है और इनके मर्द मेंबर हैं, तो जैसे ये चाहेंगे वैसे होंगे। तो इनको अगर मना ले या किसी तौर इनको कंप्रोमाइज़ के लिए मजबूर कर ले। तो वो बोल रहा था मेरे को कि तुम भड़वे हो, तुमने कंप्रोमाइज़ ना किया, ना ही तुमने कोई कत्ल किया, ना ही तुमने कोई बच्ची को मारा, ना उन लोगों को मारा तुमने। ये कारोकारी की रस्म तुमने बातें तो अच्छा होता। तो वो लोग चाहते थे कि बच्ची को मार दो, काली कर दो। तो बहुत गुस्सा आया
फिर हमारे वालिद ने कहा भाई हम कलाशनकोव कल्चर वाले आदमी नहीं हैं, तुम भी पढ़े लिखे हो, हम भी पढ़े लिखे हैं, पढ़ी लिखी फैमिली से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम कानून का सहारा लेंगे। इसको कंडम करते हैं, हम जिरगा को नहीं मानते, हम कत्ल हो जाएंगे, जिरगा को नहीं मानेंगे, हम इंसाफ चाहेंगे, कायनात के इंसाफ लेंगे। असांखे डर इहो आहे त मुंहिंजी न्याणी असां गांव मोटी वेंदासीं त मुंहिंजी न्याणी खे जेको सो कारी करे मारे छॾींदा। हुननि सां जवाबदारनि सां काइनात जवाबदारनि सां मिली हुननि खां पैसा वरिता अथई, चवंदा त मोटी अचो त जेको सो असां छोकिरी खे मारे ख़तमु करे छॾियूं कारी करे। असां ॾुख बुख सही वेंदासीं, वेलो वेहूं था, वेलो खाऊं था, इन जे करे रुॻो त इंसाफ़ जे लाइ त इंसाफ़ असांखे मिले, मुंहिंजी काइनात खे इंसाफ़ मिले। जिन ज़ालिमनि मुंहिंजी न्याणी जी ज़िंदगी बर्बादु कई आहे, असांखे बर्बादु कयो अथनि, उन्हनि खे सज़ाए मौत मिले, तॾहिं असां ख़ुशि थींदासीं, तॾहिं सम्झंदासीं त असांखे इंसाफ़ मिलियो आहे असांखे। नमस्कार। From the start, there was another side to the story. मेरा नाम हबीबुल्ला शेख है। शाबान शेख जिसको कायनात सुमरो केस में इन्वॉल्व किया गया, मैं उसका मामू हूँ। हमारा इसी जुर्म से किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मेरे भांजे को बिला वजह फंसाया गया। This is his nephew. He owns this shop. Kainat says she was raped here by him and the other men. मुंहिंजो नालो शाबान अली शेख आहे, मुंहिंजो रेशम गली में दुकानु आहे। त बाबा हिन शाबान रेप कयो आहे, एहसान कयो आहे, कलीमुलात ऐं रोशन हो। असां हींअर बि क़ुर शरीफ़ ते हथु रखी ऐं चऊं था त जेको आहे सो असां बेक़सूर आहियूं। हिकु सनी फणी दे जो नारी हां लेस पटी रसी। आहे छा मसालो करे, हुननि सॼे दुकानदारनि खां पुछा कई, हुननि पुछा कई त बाबा हिते को अहिड़ो वाक़ियो थियो आहे हुन बाज़ार में। हुननि दुकानदारनि चयो त बाबा हिते अहिड़ी का गाॾी टैक्सी बि नथी सघे, त काइनात चए थी मूंखे हुते अंदरि ज़िना करे 6 ॼणनि रेप करे ऐं कार में खणी हलिया विया आहिनि। असां हिते चयो बाबा इहो कूड़ आहे, उहो शेख माण्हू आहे, निमाज़ी माण्हू आहे, 5 वक़्त निमाज़ था पढ़ूं, अलाह जा लख एहसान, शादीशुदा माण्हू को अहिड़ो को कमु थोरी कंदो। Besides Sheikh, Kainat accused 3 other men of the rape. All of them denied the crime. A month after Kainat alleged that she was raped, the family fled to Karachi, fearing for their lives. By then, Kainat's story had started to gain major media attention. A women's organization, War Against Rape, had decided to help her. जब हमारा ये वाक़या हुआ था तो हमारे साथ भी ये वडेरे कह रहे थे कि जरगा करो और लड़की को कारी करके मारो। तो मेरे अब्बू ने कहा हम नहीं मारेंगे क्योंकि हमारे बच्ची का कोई कसूर नहीं है। These tribal councils, which are called jirgas here, they've got a couple of elders of that community who have been proven to be wise and impartial or whatever, and they sit and they look into cases or complaints that any member of that community has against a person or a couple of people from within that community. So these people essentially have the power to not just summon people to come and explain what has happened, but they can also pass judgments without
the aggrieved or the complainant ever actually entering into the formal criminal justice system. These guys have been proven time and again to really give bad decisions. वहाँ पर ऐसा होता ही ऐसा है कि जहाँ बस जो बासर लोग होते हैं उनके बेटे होते हैं वो ये गंदी काम करके फिर उन लड़की को मार देते हैं, या तो काली करके मार देते हैं या ऐसे ही। आदमी को कुछ नहीं कहते आदमी को वो तो बासर लोग होते हैं ना, बस वो चुप हो जाते हैं, जब फिर दोष ठहराते हैं लड़की को। ये बासर लोग होते ही ऐसे हैं कि जरगा करो वरना यहाँ से निकलो। क्या कहते, तुम्हारे अब्बू ने तो बहुत वो किया कि नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं होने दूंगा कारी, और इसका फैसला जी मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया। बिल्कुल, और उन्होंने अब्बू ने मेरे भाई कि हम कोर्ट जाएंगे और ये जिरगे का फैसला हम चाहते हैं कि कानून की तरह उनको सज़ा मिले, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और की बेटी के साथ ना हो। The family said that back in their village, they owned a house and 2 cars. But here in Karachi, they now lived in a 2-bedroom apartment. यहाँ पर हम अपने अब्बू अम्मी के साथ सोते हैं, मेरी बहनें साथ में एक। ये दूसरा कमरा है, ये भाभी का कमरा है, भाभी का कमरा है। कम से कम 18 लोग रहते हैं हम लोग, 18 फैमिली रहते हैं। 2 कार थे हमारे पास, मेरे अब्बू के पास गाड़ियाँ थी, 2 कबाड़ी के दुकान थे, अपनी ज़मीनें थी और जेवर वगैरह थे, सब हमने बेच दिया। ये झगड़ों में ज़िंदगी गुजर रही है। अच्छा लगता है घर ये? नहीं, ये बहुत कम है, छोटा है। बिजली जली जाती है, पानी का मसला होता है और गैस का मसला होता है। बिल भी बहुत आता है, पानी का बहुत आता है, बिजली का, गैस का बहुत आता है। भाई ये वो बैठा हुआ है, उसकी ड्राइवरी थी, अब वो छोड़ दी भाई ने। मम्मी वो सिलाई करती है, मैं कढ़ाई करती हूँ, मिलती है सिलाई कढ़ाई तो करते हैं, पेट गुजारा होता है, वरना बस बैठे रहते हैं, वरना सीधा इंटरेस्ट करीब है, बस वहाँ जाते हैं खाना। हम तो वो है ना लड़ झड़ के निकले हैं, हम तो डरने वाले तो हैं नहीं, ज़मीन पे तो आ गए हैं। और अब हमें कहाँ ले जाएंगे? ये यहाँ तो गिरा दिया है सारे ख़ानदान को, वडेरों ने, पुलिस ने, वहाँ के नंबरदारों ने, सब ने हमें घर से बेघर कर दिया है। अब हमने अदलिया का सहारा लिया है और अदलिया में हमारी उम्मीद है कि अदलिया हमारी हिमायत करेगी, इंसाफ करेगी, हिमायत नहीं इंसाफ करेगी। The War Against Rape organization helped to find Kainat a prominent attorney to take on her case. कोर्ट में केस लड़ना है तो हम चाहते हैं कि उन जवाबदारों को आप हमारे साथ कोर्ट चले, उनको हम बंद करवाते हैं। कि इसमें 2 चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। पहली मुश्किल बहुत बड़ा इम्तिहान है जिससे तुम्हें गुजरना पड़ेगा। कोर्ट में भी जब तुम्हारा बयान होगा तो बहुत उल्टे सीधे सवाल पूछे जाएंगे और ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो किसी से नहीं पूछने चाहिए, तो तुम्हें उनके लिए तैयार होना चाहिए। जो दूसरा बड़ा इम्तिहान है वो ये है कि ये बहुत लंबी जंग है। मतलब मेरी नज़र में ये केस जो है वो कोई 5 से 10 साल तक चलेगा, ठीक है? क्योंकि कि जो जवाबदार हैं, जिनके ऊपर तुमने इल्ज़ाम लगाया, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये केस जल्दी चले, ठीक है ना? वो पहले तो कोशिश ये करेंगे वो किसी तरह रहा हो जाए और केस ना चले और फिर भाग जाए, ठीक है? क्या ये दोनों मुश्किलात फेस करने के लिए तैयार हो? जी सर। हम तुमसे सिर्फ यही कह सकते हैं कि जब तक तुम लड़ोगी हम लड़ने के लिए तैयार हैं।
क्योंकि हम कोई पैसे के लिए तो ये केस कर नहीं रहे हैं। तो तुम्हारे ऊपर है, अगर खुदा ना खास्ता तुम थक गई तो हम भी थक जाएंगे, ठीक है। अगर तुम नहीं थकी तो फिर तुम हमें भगाती रहो, हम भागते रहेंगे, ठीक है। There is not a single rape case I've done in Pakistan which doesn't have massive loopholes. And the reason for that is very simple. There is never any oral evidence. The evidence which is there, the police does not have the ability to collect that evidence. They have no forensic ability. They can't even secure a crime scene. So, whenever I take a case, the only thing which is important to me is why will this girl lie? Why will a 13-year-old girl lie that she's been gang raped by 4 people in a traditional Sindhi society? I mean, she's an outcast. She will never get married. She's destined to be killed by someone from her own family because she's impure now. So why will this girl lie? She must have a very strong motive, or she must be mad. That is the legally valid question. Why will this girl lie? हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हम कोर्ट के बहुत सारे चक्कर लगाते हैं। जिस दिन हम कोर्ट नहीं जाते हैं उस दिन सड़क पर हम भूख हड़ताल करते हैं, एहतजाज करते हैं ताकि हमें इंसाफ जल्द से जल्द मिल जाए। What one sees in society is the rise and rise of women's rights. That is why there is so much violence against them. That is why there is so much conflict on these issues in Pakistan. I mean, you have these rape victims, gang rape, small girls who come on TV and say we've been raped, you know. They're not ashamed. This kind of public confession is difficult to imagine maybe a decade, 2 decades, 3 decades ago. These girls are what I call grassroots feminists, women who have suffered, you know. And out of that suffering, they have gained the feminist consciousness. बिल्कुल हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया इसने, प्रेस ने। मलिक कायनात समरों की भूख हड़ताल, आला अदालत जाऊंगी। जुम्मा को कराची प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने एल खाना। एक हमारा प्रूफ है, जैसे कि ना कोई पूछता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था आपके साथ। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने सोचा आगे इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। खुदा तो इंसाफ हमारे साथ करेगा ना, एक दिन उसको सज़ा मिलेगी, हम यही चाहते हैं। As the weeks wore on, Kainat's case continued to draw attention. And raping and gang raping. आपको अपील करते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ हो जाए। So much so that the 4 men were arrested and thrown into jail without bail. हमारे बच्चों को तो भेड़ बकरियों की तरह कान से पकड़ के जेल में भेज दिया, जिनके लिए जमानत की भी कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? मैडम, ये सरासर रियासती जुल्म हुआ है हमारे साथ, रियासती जुल्म जिसे कहते हैं। आज से पहले कभी नहीं हुआ किसी के साथ।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा बेटा सच्चा है, ये है, वो है। वो तो जब कानून में बात आएगी, हर कोई अपने प्रूफ पेश करेगा तो फिर पता पड़ेगा सच्चा कौन है, झूठा कौन है। जो मर्डर करके निकल रहे हैं उनकी ज़मानतें हो रही हैं, मर्डर कर रहे हैं उनकी ज़मानतें हो रही हैं, दोहरे कत्ल कर रहे हैं उनकी ज़मानतें हो रही हैं, अगवा करके गैंगरेप कर रहे हैं उनकी ज़मानतें हो रही हैं। हमारी ज़मानत क्यों नहीं हो रही थी? Habibullah Sheikh turned to a leading defense attorney, Bakar Shah, who agreed to represent all of the 4 accused men. I got 20 years experience in criminal trials. I have conducted number of cases which are very much famous in Pakistan. Very famous case nowadays which I am contesting nowadays is a case of Mr. Zardari, the President of Pakistan. And any other high-profile cases that you? अब ये देखें, इसके बाद तो फिर कोई नहीं रहता ना, ये इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इतना बड़ा केस के बाद तो सारे भी छोटे ही हो जाते हैं। Gang rape is an offense which is very heinous crime here in Pakistan, and the conviction and the sentence is death. So the courts are supposed to take all the cases likewise with very, very care and caution. बहुत महीनों तक जिद्दोजहद करने के बाद आज कोर्ट ने मुझे तारीख दी है। मेरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। These are the 4 accused men, the shopkeeper, Shaban Sheikh, and 3 others, including a father and a son. Habibullah Sheikh was determined to win. On this day, he brought dozens of supporters from his village to the court. When testimony began, all cameras were ordered out of the courtroom. Kaina took the stand and told her story in court. She recounted that she was drugged and raped by 4 men. She testified that they had weapons. But her testimony had a serious problem. There had been little supporting evidence collected to back her story. She was put in the witness box and she faced lengthy cross-examination, a very, very typical cross-examination by me. And I have put almost 200 or 300 questions from different angles. She just couldn't go on because the questions were very nasty, So sadly, the judge didn't stop those questions, which he should have. Things like, which part of your clothing you removed. Who raped you first? Who raped you again? In very nasty language. On the one hand, there was expert person, and in a witness box, a village girl. There was no comparison at all, but system demands so. In Pakistan, the entire burden is on the rape victim
to make sure that the investigation is done properly, the medical examination is done properly, the trial takes place properly. Medical examination of Kainat did take place, and the report holds that there was a sexual intercourse, but no sperm testing took place. Why didn't the sperm testing take place in rape cases in Pakistan? It doesn't take place. And the reason is because the facilities are not available all over Pakistan. There was also no DNA testing, and the police investigation was flawed. The investigation officer didn't bother to collect any evidence because according to his own version, he didn't believe that she had been raped. So he never really made an effort. As Kainat's trial wore on, with little evidence on her side, it became increasingly difficult to make her case. हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है हमारे, जीने को दिल नहीं करता है। बस कहते हैं अगर मर जाऊंगी ना तो फिर भी लोग कहेंगे कि ये खराब थी ना इसलिए मर गई, लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं मरूंगी तब जब इन लोगों को मैं सजा दिलवाऊँ, फिर मैं खत्म हो जाऊँ। हेलो, केसर में पैसा लोड़ियो, केसर लड़ूं, दुश्मननि सां पैसा लड़ूं ऐं आख़िरी दम ताईं लड़ंदा रहंदासीं। इन्हनि खे का किफ़र किरदार ताईं पहुचाईंदासीं, सज़ाए मौत ॾियारींदासीं, हा न। पंहिंजी जंग लहण हलिया आहियूं ऐं असां उहा जंग जॾहिं हुननि खे असां दुश्मननि खे ख़तमु कराए ऐं पोइ असां जेको सो वापसि ईंदासीं। अलाह असां सां साथ आहे, तूं हिमत न हारजांइ, सम्झी। असां सभु तुंहिंजी माउ पीउ भाइर सभु तोसां गॾु आहिनि, भेनरूं सभु तोसां गॾु आहिनि। हमारे वो दिन याद आते हैं, हमें बहुत दुख होता है। हम चाहते हैं कि हमारे वो दिन वापस आ सोचते हैं जाए। बाजी के पहले थे हम ऐसे, अब कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्या हो गया है ज़िंदगी में, ये नहीं होना चाहिए था, सोचा नहीं था कभी कि ऐसा होगा। ये मेरी फ्रेंड के साथ है, ये स्कूल की तस्वीर है। मेरा दिल करता था मैं पढ़ूं, आगे पढ़ूं और डॉक्टर बनूं, लेकिन हमें तो मालूम नहीं था कि ये मेरे साथ इतना जुल्म होगा, मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती होगी। During the lengthy trial, the defense would also present their case, saying that there was no rape. Instead, they argued, there was a marriage between Kainat and one of the accused rapists, Ehsan Thibault. Their evidence? A marriage certificate, photographs, and a story of a love affair. इनका सर आपस में इश्क हो गया था, मोहब्बत का ताल्लुक था इनमें। ये मशहूर बात है वहाँ की। खुलेआम कायनात एहसान से मिलती थी आके दुकान पे। जनून में इन्होंने ये किया कि घर से भागे। एहसान के बाप ने आके हैदराबाद कोर्ट में इनकी शादी करवाई।
नहीं, बाद में इसने इतनी बड़ी कंपेन क्यों चलाई? अगर वो शादी से इनकार हो गई थी जी, तो तलाक ले लेती वो। ये जो इतनी बड़ी उसने कंपेन चलाई कि गैंग रैप हुआ है, इसके पीछे क्या है? कायनात के वालिदैन राज़ी नहीं थे इसमें कि ये एहसान से शादी करे। ये निकाहनामा है, ओरिजिनल है। ये कायनात सुमरो का नाम है, ये उसका एड्रेस है, ये एहसान का नाम है। ये रजिस्ट्रार निकाह का सिग्नेचर है, ये थंब इम्प्रेशन है, अंगूठे ये थे, ये रजिस्ट्रार की अटेस्टेशन है। ये सारी वेरीफाई हो चुका है, ये सारा निकाहनामा। फ़ोटोज़ हैं और इसमें आप देखें बाकायदा गोरा चिट्टा लड़का है। ज़ाहिर है इसकी उसके साथ मोहब्बत हुई थी तो कोई कुछ तो देखा होगा, तब तो मोहब्बत हुई। We asked Kainat about the photos. She said she didn't remember having her picture taken with Ehsan. मैं तो नशे की हालत में थी। इन लोगों ने कोर्ट में दिखाई थी, इन लोगों ने मीडिया पर दिखाई थी। ये मुझे मालूम नहीं है कि कैसे बनाई। As far as the photographs are concerned, you just can't look at them and say, oh, I see these are two happy people, okay, there's no rape. You can't do that. There is a procedure laid down in law of how those photographs are really proved. That was not followed. He presented this argument at the trial, saying that the negatives of the photos were never presented. But there is also the marriage certificate. We asked him how Kainat's fingerprints and signature got onto the document. She says that I signed some documents. She vaguely recalls that she was in some court. वो उन लोगों ने हथियारों के जोर पर ये लगाई थी, अंगूठे। मैं नहीं लगा रही थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था, पता नहीं था कि ये कौन से कागजात थे। Defense of marriage is a very common defense, because that is the usual practice, is that you rape a woman in the night or gang rape her and then force her to get married so that it can be justified. There are judgments by the Supreme Court where the same defense has been taken. Like, look at these photographs, look at these marriage certificates. I think the rapists in Pakistan are not very creative about their defenses. They keep on coming up with the same defenses. ये अपने बचाने के लिए, क्योंकि इन लोगों को सज़ाए मौत मिलेगी अब। मेरी उम्र तो 13 साल थी। अगर मुझे शादी करने का शौक होता, मैं अपने अबू को कहती। The thing about the marriage is that the key witnesses who could have validated the marriage did not come and give evidence. From the court documents, we found the name of the cleric who says he married Kainat and Ehsan. We traveled to a nearby town to find him. मैंने कायनात सुमरो का निकाह पढ़ाया था। मेरे पास लाइसेंस है, मैंने लाइसेंस से निकाह पढ़ाया। लड़की से हमने पूछा भी था अल्फिया कलमा पढ़ा के कि भाई कोई ज़ोर ज़बर तो नहीं है, कोई बंदूक की ज़ोर पे तो मैं तो नहीं लाया, अपनी खुशी से निकाह कर रही हो? उसने कहा मैं अपनी खुशी से निकाह कर रही हूँ। नहीं कोई तशद्दुद, कोई दबाव या कोई ऐसे जो है कोई बंदूक के ज़ोर पे अगवा करके लाए हैं या ज़ोरी। We had learned from her school and birth records that Kainat was 13 years old at the time. जिस वक्त उसकी शादी हुई थी, उसकी उम्र जो स्कूल के रिकॉर्ड में थी, वो 13 बरस थी। क्या आपको मालूम था कि वो 13 बरस की है? नहीं, हाँ वो सही थी, 18 साल थी उसकी उम्र, 18 साल थी। और निकाह करते वक्त आप नहीं देखते कि आपको चेक करने की ज़रूरत होती है कि नहीं, वो हमको डॉक्टर थोड़ी है जो उसको चेक करेंगे, हाथ लगाएंगे, करेंगे। हमारी माँ बहन है। According to Pakistan's secular laws, a woman under 16 cannot consent to marriage. But there is a loophole.
As an Islamic state, Pakistan also follows Islamic law, known as Sharia law, which states that a girl who has reached puberty can be married, even if she's a minor. And here in Pakistan, when there's a conflict between the two sets of laws, the courts tend to side with the Islamic law. After years of hearings and delays, the judge finally summoned the accused to the court for the verdict. All the accused persons, as well as myself, the prosecutor, the judge, all were present in the courtroom. My clients were behind the bar since last 3 years. So there was great apprehension. After a 3-year-long trial, the judge would side with the men. हम सलाम पेश करते हैं आज़ाद अदलिया को जिसने कानून की बालादस्ती कायम की और हकदारों को 3 साल बाद वही इंसाफ मिला जिसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान शरीफ में हुक्म दिया है. After years in prison, on this day, Ihsan spoke publicly about कायनात. कायनात सुमरों में साथ रखूंगा, मैं उसको लूँगा. हम 4 साल जेल काटा है, हम इसको लूँगा. हमारे बीबी है जो हम रखेंगे उसको साथ. The judge believed the marriage story, ruling that Ihsan's marriage to Kainat was valid, even if she was only 13, following Islamic law rather than secular law. He went on to say that another reason he had decided against Kainat was because she had accused a father and a son of a gang rape. In his view, he said, that would never happen in Pakistan. He concluded that Kainat's accusations were a product of her own fantasy. जज साहब ने तुम्हारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया. मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं किया और उन्होंने ये लिखा कि ये तो एक ख़याली कहानी सुना रही है और जेम्स बॉन्ड की कहानी. और उन्होंने ये भी मान लिया कि वो जो निकाह था वो भी दुरुस्त हुआ था. तो मुझे बड़ा दुख हुआ वो पढ़ के. एक तो उन्होंने यकीन नहीं किया, बल्कि बड़ा दुख हुआ कि जैसे उन्होंने मजाक उड़ाया. जिसके लिए हम ये जिद्दोजहद करते हैं अपने इंसाफ के लिए, अगर वो ना मिलेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे. हमें इंसाफ चाहिए. हम कोई जादू तो नहीं कर सकते. तुमने देखा कि हमने केस किस तरह चलाया. हमारी नज़र में जितनी हम में क़ुव्वत थी और जितनी हम में समझ थी उसके मुताबिक हमने केस चलाया. आखिर में तो जज साहब ने ही फ़ैसला करना है. हमारी नज़र में उन्होंने गलत फ़ैसला किया. तो बस ये एक चीज़ है यहाँ कि इंसाफ आसानी से नहीं मिलता और बहुत उसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है, जो तुम कर रही हो. यही सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, मेरी पढ़ाई बर्बाद हो गई, लेकिन मेरे घर वालों की पढ़ाई सब कुछ बर्बाद हो गया. उन लोगों को जो कहना है कहीं, लेकिन मेरे साथ ज्यादती हुई है ना,
ये तो मुझे मालूम है ना, सारे लोगों को। हमने अपना घर छोड़ दिया, हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया। हमारी जो जिंदगी गुजर रही थी वो बेहतर गुजर रही थी। अब जो जिंदगी गुजर रही है वो बहुत बुरी गुजर रही है। इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? जब सोचती हूँ कि अपना घर याद आता है, अपनी ऐसे हंसते थे, ऐसे खेलते थे अपने घर में, वो याद आता है तो हमारा दिमाग बढ़ता है। किसी को नहीं बताती, किसी को नहीं, बस ऐसे रहती कि कोई परेशान ना हो, अपने बाप को नहीं, अपनी माँ को नहीं, बस। With the men freed, Kainat and her family told us they now fear for their safety. बाजी सुबह का टाइम था, तकरीबन 10-11 बज रहे थे, कोई भी नहीं था घर में। हम लोग किचन में खड़े थे, मैं और कायनात खाना बना रहे थे। कुछ लोग आए, दरवाज़ा टक किया, हमने जवाब नहीं दिया। उन लोगों ने कहा निकलो निकलो बाहर निकलो। हम लोग जवाब नहीं दे रहे थे उन लोगों को। उन्होंने कहा निकालो, कायनात को भी निकालो। बाजी हमारे ऊपर बहुत हमले हुए हैं। उन लोगों ने कहा है कि कायनात हमारे हवाले कर दो। हमने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा। यहाँ पर कायनात का मसला हो गया, उसी के सिलसिले में हम यहाँ कराची आ गए। अपनी कबाड़ी की दुकान चलाता था, उन लोगों ने वो भी नहीं चलाने दिया, वो दुकान भी मैंने बंद कर दिया। तो ज़िंदगी हमारी तो अपसेट हो गई है। क्लाशनकोफ कल्चर है उनका, वो मारना ढाना जानते हैं। तो वो लोग कहते हैं तो लड़की को ही ख़त्म कर दो, अब तो सारे दुश्मन बन गए। Then, just months after our interview with him, a tragic turn of events. He was found dead. Kainat and her family believed the 4 men she had accused of rape were responsible. मेरा भाई आज शहीद हो गया है। मेरा भाई बेगुनाह, उसको 3 गोलियां लगी है। अब हमारा क्या बचा? हमारे पास कुछ नहीं है। कोई हुकूमत हमारी बात नहीं सुनती है, किसको कहें? कायनात सोमरो जी ये सिंध की बेटी है, इनके साथ बिल्कुल हक और इंसाफ जो है वो होगा। ये मेरे 4 बहनें, ये 4 भाई थे, अब ये 3 भाई हैं। अब हमारा कोई नहीं है। आज मेरा भाई गया है, खुदा ने कहा कल मेरा बाप जाएगा, फिर किसको कहेंगे? किसको? हम कभी नहीं भूलेंगे, मेरे भाई का खून कत्ल नहीं भूलेंगे। बेकसूर वो बेचारा भाई मर गया, इंसाफ भी नहीं मिला, भाई भी हमने खो दिया अपना, कुछ मिला ही नहीं हमें।
कायनात सुमरो वाहिद नहीं, हमारे माशरे में इज्तिमाई जुल्म ज़्यादती के ऐसे कई वाक़यात हैं जिससे मुतासरा सुस्त अदालती निज़ाम के बाद Kainat's brother's death put her story back into the national headlines. बाद अज़ां कायनात सुमरो का ये भाई मुताल्लिका गांव के वडेरे के जुल्म के हाथों अपनी जान गंवा बैठा। उन लोगों ने कहा तुम लोगों को देख लेंगे, अब क्या तुम लोगों को मार डालेंगे। Famous politicians came to her side. गवर्नमेंट के सामने आप इल्तिजा करें कि आपको इंसाफ मिले। From the start, the men denied playing any role in Kainat's brother's death. कायनात तुमरो जिते वञा कायनात तुमरो अची हर चैनल में हर जेको अची सब पाण ॻाल्हाए कोन थी सघे। अरे बाबा मारवी मेमण आई ताईं ॿिया आया हिन ॾे वज़ीर मिनिस्टर आया। असां सां कायनात ऐं कायनात जे वालिद वॾो ज़ुल्म कयो आहे। हुन जे मथां कूड़ा इल्ज़ाम हणी कायनात जो पीउ कायनात खे मीडिया ते आणे बिला वजह जी शोहरत हासिल कई, बिला वजह जी शोहरत। कायनात जे लाइ इहो थियणु खपे त उहो चुपड़ी करे वेही रहे। असां छा चवंदासीं, असां कारोबारी माण्हू आहियूं, इज़तदार माण्हू आहियूं, असां चुप करे वेठा आहियूं, असां हुनखे माफ़ करे छॾियो, असां हुनखे माफ़ करे छॾियोसीं। बहरहाल हूअ हाणे चुप करे वेह, इज़त सां वेह, सही किरदार जी न आहे कायनात, सही किरदार जी हुजे हा त वरी हाई कोर्ट में अपीलूं न करे हा, मीडिया में न वञे हा। जेकॾहिं हिन जो कूड़ साबित थी वियो त चुप करे घर वेहणु खपे हा, हुनखे पंहिंजो मुड़ुसु करणु खपे हा। सही न आहे कायनात, कायनात सही न आहे, इज़त वारी न आहे। The police investigation into the brother's death would be closed after 4 months due to lack of evidence in the case. ये अभी आप जो देख रही हैं ना, पानी रुका हुआ है। रुका हुआ पानी बहुत खतरनाक होता है, समझा ना। अब लड़की को ये उठाएंगे, जिसकी बीवी है ये उठाएगा। अब वो कौन से चक्कर में, कौन सी प्लानिंगों में, वो मंजर आम पे नहीं है। और इस बात पे मर्डर होंगे। और आपको तो पता है कि आप तो अखबारों में तो पढ़ती होंगी कि ये किस्से तो ऐसे ही होते हैं कि कई मर्डर हो जाते हैं इस पे। माए सां शादी करण थी चाहियां, मुंहिंजी भाई इज़त आहे, मुंहिंजी ज़ाल आहे, मां राणी थो मांसि। न ईंदो बसि भड़वा जेको आहे सो ईअं छॾे ॾींदासीं। जेल में वक़्तु सही न हो, नुक़सानु इहो छो माना घर उलियो तबाह थी वियासीं। वरी जेको आहे सो हर शइ वयूं मेहूं वयूं। मां तो चाहियां त जेको आहे सो छोकिरी मां हिननि खां वठंदुमि सही हली हली, कॾहिं बि मूंखे माना इहो माना शादी केरु बि कंदो न, मां हुनखे मारींदुमि ऐं छोकिरीअ खे मारींदुमि। भाई कहता था मुझसे कि कायनात कुछ भी हो जाए ना, मुझे यहाँ मैं हमारे घर वालों को कि इन लोगों को फिर भी छोड़ना नहीं, हिम्मत नहीं हारना। हम तुम्हारे साथ हैं, सारे लोग घर के जो भी हैं अफराद तुम्हारे साथ हैं। हमें आने जाने में खतरा है, हमारे घर पर हमला हुआ था कराची में।
मैंने अल्लाह पे छोड़ा है और अदालत पे छोड़ा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। Since her brother's death, Kainat lives under police protection. जिन लोगों ने हमारे ऊपर ज़्यादती की है, जुल्म किया है, जिन लोगों ने हमें घर से बेघर किया है, हम उन लोगों को सज़ाए मौत दिलाएंगे। The story we had come to hear still had no ending. Like other cases in Pakistan, it would remain at its heart a mystery with no clear end in sight. They want to go ahead with the case. I will keep on representing her. I cannot even imagine that people who are so vulnerable are willing to risk their lives of their family, they are willing to be displaced, and even then want to fight. In their struggle, there is so much hope. Ultimately, I think it's very difficult to stop this tide of the assertion of women. Short of some kind of a counter-revolution in Pakistan, I don't see these rape victims being put back in their homes and told to shut up. I frankly don't see that happening. Frontline is made possible by contributions to your PBS station from viewers like you. Thank you. And by the Corporation for Public Broadcasting. Major support for Frontline is provided by the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, committed to building a more just, verdant, and peaceful world. More information is available at macfound.org. Additional funding is provided by the Park Foundation, dedicated to heightening public awareness of critical issues. And by the Frontline Journalism Fund, supporting investigative reporting and enterprise journalism. Additional funding for this program is provided by the Pulitzer Center and the Fledgling Fund. This and other Frontline programs, visit our website at pbs.org/frontline. Frontline's Outlawed in Pakistan is available on DVD. To order, visit shoppbs.org or call 1-800-PLAY-PBS. Frontline is also available for download on iTunes.